Am I audible to everybody? Yes? Okay, let's start. So, good morning everyone. This is Roma. Welcome to ODI classes. Pilamane, previous class रे आमे यूनिट 5 curriculum पढ़िथिले. So, एबे आमे यूनिट 6 जेटीर यूनिट 6 जोटा curriculum transaction अच्छी, ठीक अच्छी, ता विषय पढ़िबा. सो प्रीवियस क्लास रे तमे माने जानि देइथिबो पिला माने हमर करिकुलम विषय रे. सो व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? यस, वेरी गुड. करिकुलम इज ए टूल. Curriculum is a tool in the hands of artist. In the hands of artist to mold his material. Material means student or pupil according to his ideals. कहले aims and objectives in his own studio. कहले own studio कहले हमर स्कूल. कौन? स्कूल. जेनराली आमे कहिबा को गले हमर करिकुलम होची पिला माने कोन? पाठ्यक्रम. करिकुलम होची पाठ्यक्रम. करिकुलम गोटे लैटिन वर्ड रु आसीची, क्यूरेर बोली गोटे लैटिन वर्ड रु आसीची, जार अर्थ कि टू रन और टू रेस ए कोर्स. टू रन और टू रेस ए कोर्स. दौड़िबा बा दौड़िबा को रास्ता. कहले कौन दौड़िबा ना आमर टोटालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस को नहीं कि आमर होल करिकुलम तैयारी हेची. सो चलो पिला माने आमे प्रोसेस ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन आज पढ़िबा. तो मैंने जल्दी जल्दी जॉइन हुआ. एमती धीमा ही जाऊनी पिला माने टिके बी अवेयर जेटी आसुची पिला माने, ठीक अछि. सो आसीबा 2-3 मास भितरे. सो एबिठु प्रिपरेशन कले तमे तमे क्रैक करि परिबो, ना हेले डेरी ही जिवो, ठीक अछि. सो लेट्स स्टार्ट. सो यूनिट 6 रे आमे माने एई सब पढिबा गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलर ट्रांजैक्शन एनसीएफ 2005, specifying objectives of curriculum in the learner's context, selection and organization of learning activities and experience. तापरे स्किल्स सब जो गुड़ा रही छी हमर क्वेश्चनिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स. सो प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट एंड क्लासरूम मोमेंट ए सब विषय रे हमें पढ़िबा को जाउछु, ठीक अछि. सो श्री गुड मॉर्निंग. सो शेयर कर दियो श्री, दैट टू बी बहुत पिला जॉइन हेबे. ओके. सो आमे जो एनसीएफ 2005 जो टर्म अच्छी. सो व्हाट इज एनसीएफ? एनसीएफ कहले तमे माने कौन बुझ, ठीक अच्छे. एनसीएफ कहले तमे माने कौन बुझ. सो देखिदेबा आमे एनसीएफ कहले कौन बुझ. एनसीएफ NCF 2005. So it is a policy document. एटा गोटे होचे document, ठीक अछि. Policy document by whom? By NCERT. NCERT रो एटा गोटे policy document. NCERT किए? National Curriculum, National Council for Educational Research and Training. National Council for Educational Research and Training. एटा गोटे पॉलिसी. एनसीएफ 2005 गोटे पॉलिसी जोटा कि हमर एनसीईआरटी देइची. आ पूर्वरु हमर एनसीएफ 4 थर हेइची. वर्तमान को नै कि एनसीएफ 2023 को मिसे कि दिस इज 5 टाइम. सो एनसीएफ फास्ट हमर हेतिला एनसीएफ 1975. मन रख ए टर्म गुडा. 75 रे फास्ट हैला. देन सेकंड एनसीएफ आसी गला 1988 रे. देन थर्ड एनसीएफ आस्तला 2000 रे. देन फोर्थ एनसीएफ आसीला 2005 रे. तापरे फिफ्थ एनसीएफ आसी जाइछि हमर 2023. 2023 रे फिफ्थ एनसीएफ आसी जाइछि. किंतु तम मानकर सिलेबस रे 2005 को नै कि 2023 टा इंप्लीमेंट ए पर्यंत न हेतिबारु. सो आमर एनसीएफ 5 पर्यंत एबे अटकिछि.
सो एनसीएफ 2005 कहा रिकमेंडेशन हेतिला प्रोफेसर एसपाल ए मन रख प्रोफेसर एसपाल गोटे कमिटी करथिले 1992 रे ठीक अछि सो से 1992 को नै कि हमर ताकू टिके रीमोडिफिकेशन है कि 2005 रे से आकू इम्प्लीमेंट कले ठीक अछि एटा कोन गोटे पॉलिसी डॉक्यूमेंट एटा करिकुलम टा किभली हबो टोटली हमर टोटल सब्जेक्ट को नै कि हमर ऑल करिकुलर सब्जेक्ट एंड नॉन करिकुलर सब्जेक्ट ओके हमर एकेडमिक सब्जेक्ट नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स को नै कि हमर सबु ए एनसीएफ 2005 गोटे ब्रीफ डॉक्यूमेंट एटा गोटे डॉक्यूमेंट सबु स्कूल माने कौन करेंगे ना एनसीएफ 2005 को माने की चलिए कहले कौन ना तार एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी जरिए जो बुक गुड़ा आसीबो से गुड़ा हम स्कूल पब्लिश हवा मैंडेटरी ठीक अच्छे सो एटा तुमको गोटे ब्रीफ आइडिया दे देली 2005 रो आउ गोटे मेन हेडिंग होची तार होची लर्निंग विदाउट बर्डन बिना किसी बर्डन ने बिना किसी हडल्स रे बिना किसी बोझ न उठे की पाठ पढ़िबा ठीक अछि बेसी बैग नवार नाही एबे हमर जो बैगलेस डे मना होची सेटा एनसीएफ 2005 करथिला सो बैग कमाई जिवो बट हम पिलां को क्वालिटी एजुकेशन दबु कोन दबु क्वालिटी एजुकेशन गुणात्मक शिक्षा दबु ठीक अछि एटा सरला तमरो एनसीएफ 2005 रो गोटे ब्रीफ आइडिया देन क्लियर So, curriculum transaction is the process of planning, implementing and evaluating curriculum. It is a process of planning, implementing and evaluating curriculum. Curriculum तैयारी हबा पाठ्यक्रम तैयारी हबा पाई प्लानिंग करिवा प्लस ताकू इम्प्लीमेंट करिवा से इम्प्लीमेंट हेइछ कि नाही प्लस ताकू इवैल्यूएट करिवा मींस व्हाट जे ताकू मूल्यांकन करिवा एटा इफेक्टिव बा नॉन इफेक्टिव केते इफेक्टिव पिलांग ऊपर ठीक अच्छे सो acting as the bridge between plan learning and classroom experience. It involves teachers managing content, selecting methods, example experiential learner centered and using resources to deliver, monitor and assess learning. It converts curricular goals into active and practical knowledge. Okay, so ये कौन करे ना एटा टीचर्स मैनेजिंग कंटेंट टीचर मानू केमती मैनेज करा हबो तार कंटेंट को नहीं सिलेक्टिंग मेथड्स हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर टीचिंग सो एक्सपीरियंशियल लर्नर सेंटर चाइल्ड सेंटर हमर लर्नर सेंटर जा चाइल्ड सेंटर से हमर ट्रेडिशनल मेथड थिला सेडा होची स्टूडेंट्स हमर टीचर सेंटर्ड मेथड सेटा एबे नाही एबे लर्नर सेंटर्ड मेथड आसी जाईची चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ठीक अछि एंड यूजिंग रिसोर्सेस टू डिलीवर मॉनिटर एंड असेस लर्निंग इट कन्वर्ट्स करिकुलर गोल्स इनटू एक्टिव प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर सो एटा कोन करे करिकुलर गोल्स को एक्टिव और प्रैक्टिकल नॉलेज रे कन्वर्ट करे हमर तो पॉलिसी को डॉक्यूमेंट गोटे एनसीएफ गाइडलाइन प्रिपेयर कर देला बट गाइडलाइन टा केते इफेक्ट हबो गाइडलाइन टा मना होची ना न मना होची सो करिकुलम ट्रांजैक्शन दिस इज अ प्रोसेस सो concept of curriculum transaction amar concept kon rahila curriculum transaction is the effective and desired implementation of the curriculum contents on the basis of aims and objective listed in the curriculum.
एटा गोटे इफेक्टिव और डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम कंपोनेंट्स करिकुलम रो जो कंपोनेंट्स रहला फर्स्ट कंपोनेंट्स होची कोन नीड्स ऑफ द चाइल्ड तापरे आमे जो पढ़िथिलु चारटा स्टेप अछि तार हिल्डा तावा मॉडल कहिथिली टाइलर मॉडल कहिथिली सो आमर जो चारटा करिकुलम रो डेवलपमेंट रो चारटा आमर स्टेज अछि ताकू नै कि केमती इंप्लीमेंट करिबा करिकुलम कंटेंट रो बेसिस ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिस्टेड इन द करिकुलम सो करिकुलम ट्रांजैक्शन इनकॉर्पोरेट्स इफेक्टिव प्लानिंग फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर इट्स लर्नर्स organization of planning administration implementation of the organized planning and evaluation of the implementation by the implementer and the experts in the relevant field so एटा गोटे इफेक्टिव प्रोसेस लर्निंग एक्सपीरियंस रो एटा इंक्लूड करूची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ए तीनटा जिनस को करिकुलम ट्रांजैक्शन सिंपली कहवा को गले कोन कहबा ना हमर प्लानिंग प्लस इंप्लीमेंटेशन होउची कि नहीं एटा देखिबा को हमर करिकुलम ट्रांजैक्शन हुए कुआ जाय ओके सो आमर गाइडिंग प्रिंसिपल्स रही एमसीएफ रो पांचोटी गाइडिंग प्रिंसिपल रही कौन कौन ना फर्स्ट होची एनश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द रोट मेथड्स पूर्व रे आमर घोषा पाठ थिला गुरुकुल शिक्षा जतबेले चलथिला घोषा पाठ थिला पिला माने घोषती की सुनी की मन रखुतिले सुनिले प्रथमे तापर ताकू लर्न करथिले तापर मन रखुतिले बट अबिका रोट लर्निंग टोटली उठी गला एबे एक्सपीरियंशियल लर्निंग आसी गला activity based learning आसी जाइछि okay then connecting knowledge to life outside the school enriching the curriculum so that it goes beyond textbook nurturing and overriding identity informed by caring concern within the democratic polity of the country now making examination more flexible and integrating them with classroom life हमरो examination को आउरी सहज बा सरल करिबा ओके सो ताको क्लासरूम लाइफ रे इंप्लीमेंट करिबा केमती करिबा एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक करिकुलम को एमती उन्नत बनेबा कि यह टेक्स्ट बुक रु हमर बियॉन्ड हबो माने बियॉन्ड मींस ता ऊपर टेक्स्ट बुक रु आहुरी भलो हबो ठीक अछि टेक्स्ट बुक हमर किछि दरकार नाही so nurturing and overriding identity informed by caring concerns within the democratic polity of the country amra jo democratic India is a democratic country so amra democratic country ro jo amra नीति आ नियम अछि ताकू मानि कि amra policy टा based हबो ठीक अछि so that पिला माने कोन करिवे पिला माने actually लर्न करिवे भलो भाबरे सो एन्श्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स एटा होची वेरी इंपोर्टेंट कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल हमर जत्ति की नॉलेज अछि आउटसाइड द स्कूल स्कूल बाहर आमे कोन कोन सिखुचु माने पाठ्यक्रम एपरी भाबरे प्रस्तुत हवा उचित जे कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल हमर स्कूल बाहर रो शिक्षा ता बेसी हवा जरूरी हमर सोसाइटी को बुझिबाटा हमर जरूरी ओके सो देखिना बा क्वेश्चन हमर एमसीक्यू देखिबा व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम ट्रांजैक्शन एज पर एनसीएफ 2005 रो गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन एज पर एनसीएफ 2005 रो कोन आ भितरु कोटा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल फोकस ऑन रोट लर्निंग एम्फासिस ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंस फोकस ऑन एग्जाम सो फोकस ऑन रोट लर्निंग कौन तार गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल नो मु तुमको पांचटा प्रिंसिपल देखैतिली एम्फासिस ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच एटा टिके लागुची इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नो इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें इग्नोर करबा उचित नुहे फोकस ऑन एग्जाम एटा एग्जाम बेस्ड नुहे सो आमर करेक्ट आंसर होची एम्फासिस ऑन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच भितरे हमें शिक्षा करिबा ठीक अछि क्वेश्चन आंसर दियो पिला माने सो आंसर इज बी
which is an essential skill for effective classroom transaction. आ भितरु कोटा होची गोटे इफेक्टिव एसेंशियल स्किल गोटे क्लासरूम ट्रांजैक्शन पाई क्वेश्चनिंग स्किल लेक्चर मेथड रूट लर्निंग इग्नोरिंग स्टूडेंट सो आमे जतबेले क्वेश्चन पचारिबा क्वेश्चन थ्रो करिया पिला मानकु कोन हबो पिला मानकर आंसर रेट बढ़िबो सो क्लासरूम टा इंटरेस्टिंग हबो आमे जतबेले लेसन प्लान प्रस्तुत करछु गोटे टीचर जतबेले लेसन प्लान प्रिपेयर करे से प्रथमे कोन कुए किछि गोटे प्रारंभिक इंट्रोडक्शन किछि गोटे क्वेश्चन पचारे ठीक अछि जोटा कि प्रारंभिक प्रश्नावली कहंती सेही टॉपिक रिलेटेड किछि क्वेश्चन सो कौन मैं पचारती ना क्लासरूम टा इंटरेस्टिंग हवा पाई सो क्वेश्चनिंग स्किल होची तार करेक्ट आंसर लेक्चर मेथड टा नुहे रोड लर्निंग नुहे इग्नोरिंग स्टूडेंट नुहे सो आंसर इज ए श्री सो NCF 2005 recommends curriculum transaction should be हमर curriculum transaction टा को भलिया हबा उचित curriculum transaction टा को भलिया हबा उचित टीचर सेंट्रिक एग्जाम सेंट्रिक चाइल्ड सेंट्रिक कंटेंट सेंट्रिक को पिला माने यस वेरी गुड सो चाइल्ड सेंट्रिक हमर curriculum टा चाइल्ड सेंट्रिक हबा उचित चाइल्ड सेंट्रिक बा लर्नर सेंट्रिक टीचर सेंट्रिक नुहे एटा ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एग्जाम सेंट्रिक नुहे कंटेंट सेंट्रिक नुहे हमरा आंसर होची सी NCF recommends curriculum transaction should be child centric the process of curriculum transaction involves हमर जो प्रोसेस टा से कोन इन्वॉल्व करूची only textbook reading selection and organization of learning activities ignoring learner difference focusing on punishment आमर करिकुलम ट्रांजैक्शन टा कौन इन्वॉल्व करूची ना ओनली टेक्स्ट बुक लर्निंग केवल आमे कौन करिबा टेक्स्ट बुक को पढ़िबा सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज आमर जते सिलेक्ट करिबा आमर ऑर्गेनाइज करिबा लर्निंग एक्टिविटीज आज गोटे दिन रे कौन कौन गोटे टीचर करिवो क्लासरूम टा को अति इंटरेस्टिंग करिया पई आउ इग्नोरिंग लर्नर डिफरेंस फोकसिंग ऑन पनिशमेंट नो इज सब रॉन्ग आंसर ओनली selection and organization of learning activities so answer is 4 answer is B the selection and organization of learning activity is the process of curriculum transaction is the process of curriculum transaction so answer is B which principle guides the selection of learning experience आ भितरु को principle टा guide करूची सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हमर लर्निंग एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करिया पई को हमर प्रिंसिपल टा अछि रेलेवेंस टू रियल लाइफ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर कन्वीनियंस सो हमर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रिंसिपल टा गाइड करूची सो हमर लर्निंग एक्सपीरियंस केमती हमें सिलेक्ट करबा ना जते बेले सेटा को रियल लाइफ रे हमर रियल लाइफ आउ वर्सेस हमर करंट लाइफ जो प्रीवियस लाइफ को जते बेले हमें सामंजस्य नबा सेते बेले हमें जानि परिबा जे लर्निंग एक्सपीरियंस टा को सेइटु सिलेक्ट करबा कोन कोन सो आंसर इज रेलेवेंस टू रियल लाइफ सो आंसर इज ए communication skills in classroom transaction help in yes tell the answer maintaining silence enhancing understanding between teacher and students reducing interaction increasing homework so amara communication skill in classroom transaction what do you mean by communication कम्युनिकेशन माने कौन आमर टीचर आ स्टूडेंट का भितर जो कथबार्ता सेटा होची कम्युनिकेशन ठीक अच्छे गोटे रिसीवर आ गोटे सेंडर का भितर जो गैप टा ताकू कौन कहती कम्युनिकेशन कहती सो कम्युनिकेशन टा केमती इंक्रीज हम ना एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट आमर जिते टीचर आ गोटे स्टूडेंट भितर अंडरस्टैंडिंग टा दृढ़ हम सेते बेले कौन हम ना कम्युनिकेशन स्किल इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन हो पारिबो
सो मेंटेनिंग साइलेंस चुपचाप रहिले कम्युनिकेशन स्किल तमे केमी जानिबो जानि परिबोनी सो रिड्यूसिंग इंटरैक्शन इंटरैक्शन जते बेले कमी जीवो टीचर और स्टूडेंट भितर पाठ पढ़ा सेठी गोल हे जो ओके सो इंक्रीजिंग होमवर्क होमवर्क आमे बहुत दे दबा किंतु पिला करि परिबो नाही सो आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आमे टीचर कहीं ब्लैकबोर्ड यूज करे स्कूल ले कौन ब्लैकबोर्ड नथिले चलतानी एमती आसिक टीचर लेक्चर मेथड रे पढ़ाई देबो हबो ना नहीं कहीं हबनी सो डेकोरेटिंग द क्लासरूम क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज हाइडिंग इंफॉर्मेशन अवॉइडिंग स्टूडेंट अटेंशन ना ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल टा इम्पोर्टेंट एथि पाई जे सी प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज टीचर रो प्रेजेंटेशन टा को रिप्रेजेंट करे ब्लैकबोर्ड ठीक है ब्लैकबोर्ड गोटे विजुअल एड्स तुम मैंने जानथिबो टीएलएम रो विजुअल एड्स रे ब्लैकबोर्ड जाउची सो ब्लैकबोर्ड टा हमर कोन करे क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज वेरी गुड क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज आइडिया को क्लियरली प्रेजेंट करे ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज क्लासरूम डेकोरेशन रे तो गोटे पिक्चर लगे देले भी हबो ब्लैकबोर्ड कोन जरूरी नै कि सो providing reinforcement in classroom transaction means what do you mean by reinforcement I have already taught you what is the meaning of reinforcement in which topic learning topic okay so what do you mean by reinforcement anyone yes reinforcement providing reinforcement in classroom transaction means reinforcement is a way to give punishment or reward to give punishment or reward so providing reinforcement in classroom transaction means punishing wrong answer encouraging correct responses ignoring student efforts guiding excessive homework yes the correct answer is b encouraging correct responses पिला providing reinforcement in classroom तुमको पिला हमर टीचर कोन कले ना क्वेश्चनिंग स्किल माध्यम रे तुमको क्वेश्चन करा हैला सो तमे माने केमती आंसर देला जोटा आंसर देला तुमको तमरो कोन हबो तमरो डेवलपमेंट हैला कोन डेवलपमेंट हैला ना तमरो रेनफोर्समेंट डेवलपमेंट हैला सेते बेले एनकरेजिंग करेक्ट रेस्पोंसेस जेते बेले पिला गोटे ठीक आंसर टी दे देला टीचर तक कौन कहबो वेरी गुड कहबो नॉर्मली सो आंसर इज बी क्लासरूम मूवमेंट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स हमर क्लासरूम मूवमेंट मैनेजमेंट कौन इन्वॉल्व करे पिला माने जल्दी कहो हां कीपिंग स्टूडेंट स्टैटिक ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज फॉर एंगेजमेंट रेस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट टॉक फोकसिंग ओनली ऑन लेक्चर्स so classroom movement management involves yes keeping students static पिला मानु को सेमती करके रखी दबा एटा कोन ठीक कुआडे गलो तुम माने सब जल्दी आसो so keeping students static organizing activities for engagement so yes it is the correct answer restricting student talk पिलांकर talk को बंद कर दबा focusing on lectures खाली पढ़ी भी तुमको आ किछि नहीं so answer is b classroom movement management involves organizing activities for engagement विभिन्न प्रकार एक्टिविटी करी की पिलांकु एंगेज करी की रखिबा हमर क्लासरूम मूवमेंट मैनेजमेंट को जाउची ताको ओके इन्वॉल्व करूची ए सब आइडियाज so which of the following is not a skill for curriculum transaction जल्दी कुह पिला माने yes curriculum transaction ना कोटा कोटे skill नुहे हाँ questioning skill communication skill organization skill blackboard writing skill yes so answer is memorization skill yes very good memorization skill होची गोटे skill नुहे हमरो ए सब skill हमरो include होची questioning skill communication skill आउ blackboard writing skill the correct answer is what memorization of skill
memorization of skill. So next, the objective of curriculum transaction is to, amara curriculum transaction na objective kon rahibo, finish the syllabus quickly, achieve learning outcomes, increase teacher workload, आ गोटे होची reduce student participation. amara curriculum transaction na objective kon, उद्देश्य kon, जल्दी कहो. yes, achieve learning outcomes. प्रथमे आमे लर्निंग रो आउटकम्स कोन ताकू अचीव करबा. यदि मु तुमको आज गोटे साइंस किंबा इंग्लिश पढ़ेली, इंग्लिश बा ओडिया पढ़ेली, तापरे शिशुर कोन उन्नति हो ता द्वारा, बोध शक्तिर, ज्ञान शक्तिर, शब्द भंडारर. सो आमे जदि लर्निंग ऑब्जेक्टिव ए टॉपिक रो न जानिबा, गोटे विषय ऊपर पढ़िबा, दरकर वृक्ष ही जीवन. सो वृक्ष विषय रे आमे वृक्ष हमको कौन कौन दिए, सेटा जदि गछ हमको कौन कौन दिए, कौन हेल्प करे, जदि ता विषय रे पिलांकर ज्ञानटा उदय न हैला, ताले लर्निंग टा हमर सेठी सक्सेसफुल हलबो नाही. सो अचीव लर्निंग आउटकम्स, आंसर इज अचीव लर्निंग आउटकम्स. NCF 2005 stresses curriculum should be, हमर curriculum केमिति हबा उचित. yes, curriculum केमिति हबा उचित, rigid and fixed, flexible and responsive, exam oriented only, teacher driven. जल्दी कहो. yes, flexible and responsive, exam oriented only, teacher driven. no. so answer is flexible and responsive. जेते सहज और सरल हबो और responsive हबो, पिलांक रो सुविधा रे आसुथबो ए सिलेबस टा, मोर करिकुलम टा, ताहले सेटा कोन हबो, से NCF 2005 सेइथिरे स्ट्रेस करची करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव. Which activity helps in effective curriculum transaction? आ भितरु को एक्टिविटी टा इफेक्टिव curriculum transaction करे, हेल्प करे. ग्रुप डिस्कशन, साइलेंट रीडिंग ओनली, टीचर मोनोलॉग, इग्नोरिंग क्वेश्चन. यस, आमर करिकुलम ट्रांजैक्शन केमिति कोटा को एक्टिविटी टा हेल्प करिवो. यस, ग्रुप डिस्कशन. जदि आमे ग्रुप रे डिस्कशन करूछे ताहले कोन करिबा, सेही एक्टिविटी टा आमर करिकुलम ट्रांजैक्शन ने हेल्प करिवो. ग्रुप डिस्कशन ने कोन हबो ना, पिलांकर एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. ओके, एवरी चाइल्ड इज यूनिक. सो तांकर आंसर गुडा जतबेले मिसी जिवो अलग अलग पिलांकर, सो कोन हबो ना, ग्रुप डिस्कशन टा हेल्प करिवो करिकुलम ट्रांजैक्शन. साइलेंट रीडिंग रे कल्ले किछि हबनी, टीचर मनमानी हेई परिबो नाही, इग्नोरिंग क्वेश्चन नो. द करेक्ट आंसर इज ए. द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलर ट्रांजैक्शन एम्फासाइज, हमर करिकुलर ट्रांजैक्शन जो हमर अछि गाइडिंग प्रिंसिपल कोन एम्फासाइज करूची, जल्दी कहो. यस, knowledge transmission only, holistic development of learner, strict discipline, teacher authority. yes, amaro answer is B, holistic development of learners. ame asigala amaro holistic education asi jaichi. holistic means all round development. से साइकोलॉजिकल हेई पारे, मेंटल हेई पारे, फिजिकल हेई पारे, इमोशनल हेई पारे, सोशल हेई पारे. ओके, so holistic development of learners emphasize curriculum transaction. okay, answer is B. curriculum transaction requires teachers to have, curriculum transaction कौन require करे, only subject knowledge, pedagogical skill, no interaction skill, administrative skills only. जल्दी कुह. हाँ, only curriculum transaction requires teachers to have, teacher मानकर कौन रहिबा उचित, only subject knowledge, pedagogical skills, no interaction skill, administrative skills only. yes, very good, pedagogical skill. what do you mean by pedagogy? Pedagogy means it is the art and science of teaching. it is the art and science of teaching or instruction. okay, so pedagogical skill, teacher रो कौन कौन skill रहिची, पढ़ाइबार स्किल, पढ़ाइबार कौशल, पढ़ाइबार कौशल रहिची, सेटाकू जदि हमर करिकुलम ट्रांजैक्शन ताकू रिक्वायर करे. टीचर पेडागोजिकल स्किल थिबा जरूरी, टीचर पढ़ाई पारुथबा, एंगेज करि पारुथबा जरूरी पिला माननकू. ठीक अछि.
Which of the following is a method of organizing learning experience? आ भितरु कोटा गोटे method organizing learning experience रा. Random selection, thematic integration, ignoring learner needs, focusing on exam. Yes. The correct answer is thematic integration. Thematic integration amaro education ne thematic integration means all आमर सब्जेक्ट नॉलेज को आमर एकत्रीकरण करवा. इंटीग्रेशन मीन्स एकत्रीकरण. सो थेमाटिक इंटीग्रेशन मीन्स सबु नॉलेज को आमर इंटीग्रेशन करवा. सबु नॉलेज कौन ना गोटे आर्ट्स टीचर टे गोटे आर्ट्स आमर +2 + 3 आर्ट्स जे पढ़ी सी कौन केवल को पिला पढ़ेब इंग्लिश आउ एसएसटी ताकू दिया जिवो. सो एसएसटी आउ इंग्लिश सेते को रिलेवेंट हो जिवो. Okay, so thematic integration is a method of organizing learning experiences. Answer is B. Effective questioning skills lead to. Effective questioning skill कौन lead करे? Confusing among student, deeper understanding, less participation, teacher dominance. Yes, जल्दी कुह. I am waiting. हाँ, very good. So answer is effective questioning skills lead to deeper understanding. Deeper understanding. Confuse कले तो पिला confuse ही जिबे. Less participation हेले हेई परिबनी. The effective questioning skill जेते बेले कोटे questioning skill effective हबो कोन करिवो से deeper understanding हबो. Deeper understanding हबो. पिला माने साकू बुझिबे. In curriculum transaction reinforcement should be. Reinforcement केमिति रहइबो ना नेगेटिव इग्नोर्ड एटा भूल लिखाई छी पॉजिटिव लिखाई छी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. सो आंसर इज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. सबु बेले हमर रेनफोर्समेंट कोन रहइबो पॉजिटिव आ कंस्ट्रक्टिव रहइबो. पॉजिटिव आ कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव मीन्स संगठनवाद संगठित होइकी रहिबो. हमर रेनफोर्समेंट समस्तंकर व्यूटा आसीबा जरूरी आउ सेटा सब बेले पॉजिटिव रहिबो. कोन रहिबो पॉजिटिव. द फोकस ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन इज ऑन कंटेंट डिलीवर लर्नर एंगेजमेंट एंड मीनिंग मेकिंग एग्जाम प्रिपरेशन ओनली टीचर परफॉर्मेंस. हमर फोकस ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन टा कोन रहिबो लर्नर एंगेजमेंट एंड मीन मेकिंग. Learner engagement and mean making. Very good. Answer is B. Content deliver पाई हमें curriculum transaction करूनु. Exam preparation पाई भी नुहे. Teacher performance देखा जाऊनी. Learner engagement and mean making. Curriculum transaction टा केते बेले हबो जेते बेले पिला engage हेबे आउ सेटा effective हबो meaning making. Okay. Answer is B. Which principle ensures curriculum is relevant to learners? आ भितरु को प्रिंसिपल टा एनश्योर करूची जे करिकुलम आउ लर्नर सहित रेलिवेंट माने सामंजस्य रहिची. सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच. सो व्हिच प्रिंसिपल एनश्योर्स करिकुलम इज रेलिवेंट टू लर्नर्स? नो हमर जत्ते बेले एनसीएफ कथा आसी जबो ना हमर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच होची करेक्ट आंसर. Learner centric approach. Answer is B. Learner centric approach. So next question, classroom movement helps in. Classroom movement केमिति help हबो? Classroom movement maintaining order only, facilitating active learning, restricting activities, ignoring student. जल्दी कहो classroom movement helps in. हमर classroom movement टा केमिति help हबो ना maintaining order only, facilitating active learning, restricting activities, ignoring student. Yes, answer is facilitating active learning. Facilitating. Who is a facilitator? Yes, who is a facilitator? Teacher is a facilitator. Teacher is a facilitator. Teacher is a facilitator. हमर facilitating active learning. हमें जत्ते बेले active learning को कौन करिबा एक्टिव लर्निंग को फैसिलिटेट कर दबा क्लासरूम मूवमेंट हेल्प करे ताकू. ठीक अछि. द करेक्ट आंसर इज बी. करिकुलम ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स. करिकुलम ट्रांजैक्शन कौन इंक्लूड करूची? ओनली टेक्स्ट बुक कंटेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज अलाइंड विथ ऑब्जेक्टिव्स, रैंडम टीचिंग, नो प्लानिंग.
कुह पिला माने यस वेरी गुड आंसर इज बी एक्सपीरियंस एंड एक्टिव्स अलाइंड विथ ऑब्जेक्टिव्स आमर करिकुलम ट्रांजैक्शन सेतेबेले हबो जेतेबेले एक्सपीरियंस कौन कौन आम एक्सपीरियंस कलु आउ तार एक्टिविटीज को अलाइंड करदेबा ऑब्जेक्टिव सहित ताकू एकाठी करदेबा कौन एक्सपीरियंस आउ एक्टिविटीज को सेतेबेले कौन हो जिवो करिकुलम ट्रांजैक्शन हबो सो ए तीनटा भूल आंसर इज बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास एन्श्योर्स ओडे क्लास रो इफेक्टिव कम्युनिकेशन केमिति हबो साइलेंस क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन डिसइंटरेस्ट जल्दी कहो यस इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास एन्श्योर्स गोटे क्लास रो इफेक्टिव कम्युनिकेशन केतेबेले हबो ना क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जेतेबेले पिलार कॉन्सेप्टटा क्लियर हबो सेतेबेले कोन हबो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास एन्श्योर्स तुमको मु गोटे पाठ पढ़ेली ओके आज करिकुलम ट्रांजैक्शन पढ़ेली तमे कोनटा बुझिल एटा क्लासरूम टा इफेक्टिव हैला कि न हैला सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैला ना न हैला केवल क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हेची ना नाही शिशुर कॉन्सेप्टटा क्लियर हेची ना नाही ताहा जानिबा पई हमरो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लास एन्श्योर करे The NCF 2005 framework suggests curriculum should promote आमर curriculum केमती हेबा दरकार competition only cooperation and inclusivity exclusion rote learning curriculum should promote cooperation and inclusivity inclusivity means inclusivity means समावेशता समावेशी शिक्षा समावेशी माने एकत्रीकरण जेतेबेले हबो अंतर्निवेश जेतेबेले हबो अंतर्निवेश कोऑपरेशन आ अंतर्निवेश जेतेबेले हबो एनसीएफ 2005 सजेस्ट करूची करिकुलम शुड प्रमोट कोऑपरेशन एंड इंक्लूसिविटी inclusive हवा उचित ओके एक्सक्लूजन रोट लर्निंग एगुड़ा नुहे सो आंसर इज बी व्हिच स्किल इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग डाइवर्स क्लासरूम आ भितर को स्किलटा एसेंशियल डाइवर्स क्लासरूम आमर डिफरेंट क्लासरूम्स आमर क्लासरूम रे विभिन्न प्रकार चिल्ड्रन अछंती हाँ सो आ भितर को स्किलटा तांको मैनेज करिवो क्वेश्चनिंग communication both A and B none of the above so questioning भी करिबा communication भी करिबा so answer is C हमर क्वेश्चन भी करिबा और communication तांका भीतर भी रखिबा जदि टीचर और स्टूडेंट भीतर communication न हैला ताले क्लासरूम टा इफेक्टिव हबो नाही ठीक अछि so answer is C curriculum objectives should be curriculum objective कोन हबा उचित वैल्यू स्पेसिफिक एंड मेजरेबल इरेलेवेंट टीचर फोकस्ड यस करिकुलम रो ऑब्जेक्टिव सब बेले स्पेसिफिक और मेजरेबल हबा उचित तार एम्स टा पिलांकर नीड्स टा सब बेले कोन हबो स्पेसिफिक और मेजरेबल हबा उचित ताको मपा जाय पारुथबो आउ सेटा स्पेसिफिक मीन्स करिकुलम रो ऑब्जेक्टिव मु गोटे जेटी हो किंबा 10th क्लास रो होल सिलेबस रो करिकुलम गोटे एनसीएफ 2005 और जरिया रे बना गला सो जेतेबेले बना गला सेटा स्पेसिफिक हबा जरूरी एटा 10th क्लास पाई ओनली प्रयोज्य हबा जरूरी आ मेजरेबल सेटा तार हमर तार इफेक्टटा ठीक से हैला ना नाही ताको इम्प्लीमेंटेशन परे ताको जो इवैल्यूएशन करा हबो ना सेटा हैला ना नाही सो सेटा जानिबा को कोन बी हमर करेक्ट आंसर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल curriculum objectives should be specific and measurable the process of curriculum transaction involves only planning implementation and evaluation ignoring evaluation focusing on punishment हाँ जल्दी कुह very good so planning implementation and evaluation आमर आंसर कौन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन तुमको कही देछि करिकुलम ट्रांजैक्शन नो तीनटा प्रोसेस अछि प्लानिंग
इम्प्लीमेंटेशन आउ इभालुएशन हमर प्लानिंग करिबा इम्प्लीमेंटेशन ताकू लगाइबा आ इभालुएशन होची तार मूल्यांकन करिबा ब्लैकबोर्ड स्किल्स हेल्प्स इन कुह ब्लैकबोर्ड स्किल कौन हेल्प करे टीचर को हाइडिंग इंफॉर्मेशन विजुअलाइजिंग कंसेप्ट डिस्ट्रैक्टिंग स्टूडेंट अवॉइडिंग टीचिंग यस विजुअलाइजिंग concept as blackboard writing blackboard is a visual aids blackboard is a visual aids is a part of visual aids so this is need to visualizing concept पिला मानंगु एटा blackboard एटा smart board blackboard ए blackboard टा कोन पई ए स्किल टा कोन आर कौशल टा कोन ना visualizing concept तुमको concept टा तुम सामने रे तुम देखिबा को पाउछ ओके so answer is B. The ultimate goal of curriculum transaction is curriculum transaction no ultimate goal कौन रहिबो completing syllabus enhancing learner competencies increasing teacher authority reducing student effort जल्दी कुह yes the ultimate goal of curriculum transaction is completing the syllabus no enhancing learner competencies पिल्लार केमती competencies कहले दक्षता आमर जो दक्षता अच्छी तार विभिन्न प्रकार LSRW आमर LSRW स्किल अच्छे लिसनिंग राइटिंग लिसनिंग एस रे कौन आर रीडिंग एस रे स्पीकिंग डब्ल्यू रे राइटिंग ये जो चारिटा 4 स्किल अच्छी LSRW स्किल अच्छी ताकू एनहांसिंग करिबा एनहांसिंग लर्नर कॉम्पिटेंसी तार अल्टीमेट गोल होची एटा अल्टीमेट गोल होची LSRW एनहांसिंग लर्नर कॉम्पिटेंसीज क्लियर आंसर इज बी. According to NCF 2005, what is the main goal of education? Rote memorization of textbook, passing standardized examination, connecting classroom knowledge to life outside school, ensuring strict discipline. Yes, jaldi kuho. Amara, according to NCF, what is the main goal of education? Connecting classroom knowledge to life outside school. Okay, connecting classroom knowledge to life outside school. Real versus real. Okay, real versus real. Connecting classroom knowledge to outside school. Classroom जो knowledge पाइलु आउ outside जो knowledge totally मिसेगी हमरो NCF 2005 रो गोल होची सेटा. Very good. C. आउटसाइड स्कूल स्कूल जोटा तमे पढ़िल आउ इनसाइड स्कूल बाहर जोटा पढ़िल आउ स्कूल भितर जोटा पढ़िल आमर पाठटा सेटा होची तार मेन गोल एजुकेशन न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 आ भितर कोउटा आमर गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे हां जल्दी कुह shifting learning away from rote methods, enriching the curriculum beyond textbook, making exam more flexible, focus on teacher-centered instruction. Yes, very good. So, answer is shifting is not a guiding principle. Is not a guiding principle. भलो से question को बुझो. कोटा भितरु गाइडिंग प्रिंसिपल नुहे शिफ्टिंग लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड एटा होची गाइडिंग प्रिंसिपल एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एटा भी एनसीएफ रो प्रिंसिपल मेकिंग एग्जाम मोर फ्लेक्सिबल एटा भी गाइडिंग प्रिंसिपल यस आंसर इज फोकस ऑन टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन वेरी गुड आंसर इज डी आंसर इज डी
focus on teacher centered instruction is not a guiding principle of NCF 2005. NCF 2005 advocates for a burden free environment, which means burden free environment means what? Reducing the weight of school bags and focus on understanding, eliminating all homework, having no examination, allowing students to play all day. Burden free, bojo vihina. Burden free means bojo vina. Bojo vihina. तार अर्थ कौन? Reducing the weight of school bags and focus on understanding. खाली बही खाता पुळे मेंचे धरिकी आसिले किछि पाठ हबो नाही. जदि पिला मुंडरे किछि न पसिला ताले कोन हबो? क्लासरूम ट्रांजैक्शन कोन इफेक्टिव हबो? नो. So reducing the weight of school bags and focusing on understanding is the correct answer. That focus burden free. That means burden free environment. तापाई हम स्कूल रे कौन करा जाउची? बैगलेस डे करा होची. बैगलेस डे करा होची मिनिमम 10 टा 10 टा गोटे सेशन ने 10 टा बैगलेस डे हबो. पिला माने से दिन बैग न नै के आसीबे और डिफरेंट एक्टिविटी करिवे. ठीक अछि? So answer is A. According to NCF 2005, the curriculum should be exam oriented, child centered, teacher centered, textbook centered. Jaldi kuha. Yes. Answer is B. Very good. Answer is B. Child centered. Curriculum should be child centered. Curriculum ta pilla ku nei ki haba uchit. शिशु केंद्रिक हबा उचित. शिशु केंद्रिक हबा उचित. Answer is B. Very good. So, what type of identity does NCF 2005 aim to nurture? A competitive, individualistic identity, a democratic identity informed by caring concern, an identity focused solely on technological skill, a rigid traditional identity. Jaldi answer kuha. What type of identity does NCF 2005 aim to nurture? जो NCF 2005 रो 5टा गाइडिंग प्रिंसिपल तुमको देखा है ना नहीं? यस देखे ही. सो 5टा गाइडिंग प्रिंसिपल रु आंसर होची कौन? ए डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न. एटा होची तार करेक्ट आंसर. NCF 2005 aim to a democratic identity informed by caring concern. आमर शिशुर गोटे डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी गोटे गणतांत्रिक गोटे आइडेंटिटी ताकू परिचय मान्यता मिलवा दरकार. ताकू भल भाव में पढ़ेगी. ठीक अच्छे. आमर गणतंत्र लक्ष्य कौन? ऑल आर इक्वल. ऑल आर इक्वल. प्रत्येक लोक समान गणतंत्र आगे. सो आमर एठी NCF 2005 रे किए शिशु ए डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न होची आमर NCF 2005 रो गोटे फीचर. Which of the following is considered the best strategy to deal with a disruptive student? Ignoring the bad behavior, sending them to the principal, talk privately and set expectation, punishing them in front of the class. आमर बेस्ट स्ट्रेटेजी टू डील विथ ए डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट जी डिस्टर्ब करुच क्लास रे जने डिस्टर्ब कला तमे कौन करिवो? तार बिहेवियर को इग्नोर करिवो. नो. सेंडिंग देम प्रिंसिपल तांको प्रिंसिपल को पठे कि तांको दंड दिया हबो. नो. पनिशिंग देम इन फ्रंट ऑफ द क्लास. नो. सो टॉक प्राइवेटली एंड सेट एक्सपेक्टेशन. ताकू निजे प्राइवेट भाव में ताकू कौन करवा? ताकू आनिकी कथा बा आउ ता किछि एक्सपेक्टेशन रखिबा ताठू जे सी आउ डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर देखैबो नाही. ओके. ताकू बुझाइबा. मेन होची शिशुर अंडरस्टैंडिंग. ताकू दंड दबा नुहे. इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? Effective curriculum transaction requires which of the following? Review of prior work, time management, individual responsibility, all of the above. जल्दी कहो.
आमर इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन केमिति हबो डी सुशांत कुमार वेरी गुड इफेक्टिव करिकुलम ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स रिव्यू ऑफ प्रायर वर्क आमर पूर्व जो वर्क गुड़ा आम करूँ रिव्यू करवा टाइम मैनेजमेंट करवा ठीक अच्छे इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक शिशुर रेस्पॉन्सिबिलिटी नवा कार दायित्व ना टीचर दायित्व ओके पिला गोटे क्लास रे 30टा थांतु कि 35टा थांतु आरटी एक्ट रे हमर 30टा कि 35टा पिला रहिबे पिला रहिले भी तुमको कौन करिया पड़िबो प्रत्येक पिलार सुविधा असुविधा बुझिबा टीचर दायित्व ठीक अच्छे सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव डी व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट आमर क्लासरूम मैनेजमेंट रो प्राइमरी एम कौन क्लासरूम मैनेजमेंट रो प्राइमरी एम कौन टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टू कीप स्टूडेंट्स क्वाइट टू फैसिलिटेट लर्निंग टू कंट्रोल द टीचर जल्दी कह yes to facilitate learning very good to facilitate learning answer is learning को केमती facilitate करिबा facilitator teacher is a what teacher is a facilitator means guide or helper ओके टू फैसिलिटेट लर्निंग लर्निंग को केमती पिलांग भितरे फैसिलिटेट करिवा तार हमर क्लासरूम मैनेजमेंट रो मेन प्राइमरी एम होची सेटा सो द करेक्ट आंसर इज सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम जदि गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम कहले पुपिल सेंटर्ड क्लासरूम हैला तार को अप्रोच टा बेसी इफेक्टिव हबो रोट मेमोराइजेशन गाइडेड डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन टीचर लेड लेक्चरिंग अवॉइडिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स यस रोट मेमोराइजेशन केबे भी नुहे टीचर लेड लेक्चरिंग नुहे अवॉइडिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स नुहे सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट यस बी गाइडेड डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन आमर विभिन्न तथ्यर कौन करवा उन्मोचन करवा बा विश्लेषण करवा और एक्सप्लोर करवा ताकू ठीक अच्छे गाइडेड डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन होची अप्रोचेस इट इज अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम टीचर आम पिला मानू सब बेले एक्सपीरियंशियल लर्निंग दबा गाइडेड डिस्कवरी दबा गाइड करवा किछि डिस्कवरी किछि नुआ जिनिस प्रोड्यूस करिवारे ताकू कोन करवा गाइड करवा आ ताकू एक्सप्लोर करिवारे ताकू हेल्प करवा सो आंसर इज बी विदिटनेस इन classroom management refers to what having the latest technology being aware of what is happening in the classroom knowing all the answer being popular with student with itness in classroom management refers to having the latest technology being aware of what is happening in the classroom with itness ta bhittore rahiba with itness means tanka bhittore rahiba so answer is B being aware of what is happening in the classroom as a teacher you have responsible for what is happening in the classroom okay तमर जदि क्लास थिबो आजी कोठी भी क्लास रूम रे जा भी हैला सेटा कार रिस्पांसिबिलिटी टीचर रो रिस्पांसिबिलिटी ओके सो आंसर इज बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लासरूम with itness in classroom management refers to being aware of what is happening in the classroom having the latest technology no knowing all the answers no being popular with students no the answer is B very good so
एठी आमे कौन करूँ क्लास टाक मु एंड करुँची ओके नेक्स्ट क्लास रे आमे यूनिट 7 पढ़िबा तुम कौन कौन करिकुलम ट्रांजेक्शन आ करिकुलम विषय रे जानिल सेटा मते कहिबो लास्ट क्वेश्चन गोटे पचारि दउची ओके व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम किए कहि परिबो मु प्रीवियस क्लास रे कहितली जल्दी कहो यस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करिकुलम सुशांत कुमार learner centered teacher centered activity centered and yes ma'am ओके हाँ कुह करिकुलम विषय तुम सब बुझिल तो ओके नेक्स्ट क्लास रे आमे यूनिट 7 पढ़िबा ओके बाय बाय थैंक यू ऑल हैव ए नाइस डे